Okay, so good afternoon to everyone. Now, in today lab class, we will see the programming of the inheritance first, and then we will go to the types of the inheritance which we have discussed in the class. Today, we will show it the practical implementation of that. So we already know that inheritance, there are four types of inheritance are present. That is what single inheritance, single level inheritance, then multi-level inheritance, and then third one is the hierarchical inheritance, and the multiple inheritance which we cannot perform in Java but can perform using the interface concept. So if we write the multiple inheritance concept using the in our using inheritance, then there will be the error will be shown. So that error I will show you that why this error it will show. So one by one we will see the our inheritance total for this four types of inheritance we will see, and the last one, the inheritance will not happen. For that is the multiple inheritance concept. So this is one by one we will see the programming of that using a simple example we will see, and after that we will see the method overriding concept and the final class, final method, and the final variable. So all of this program we will see that. So one by one I will show you that how this programming can be done. Okay, so the first type I will show you, that is the our first one, that is the inheritance concept, that is single level inheritance concept. So through an example we will see that how this programming should be done. So the first type, single level inheritance. So all of you know that what is the single level inheritance. That means there is a single base class, and that means there is a single parent class present, and there is a single child class. So this child class will do what? This child class will extend this parent class. This is the concept that only one our super class is present, and one our child class is present, and that child class will do inheritance, or we can say it will extend the parent class. The single parent class which is present, it will extend that. So the first example, let's say there is a class present. So I am taking, let's say there is the class name I am giving, like animal. This class name I am giving. Then inside of it, I am writing a method. Let's say the method name is void eat. This method name is that. Then there is a inside the method, there is a statement like system.out.println. So for printing any value, we are using that. So system.out.println, and let's say that statement will print. So let's say like this. This is the first class we have. That animal class name, we are naming that class name as animal, and inside of it the method we are using, let's say void it. So we have named that method like void it, and this is what inside of it, the inside of that method there is system.out.println, and this is what we are this will print, let's say eating, and that is what we have used. Let's say we are taking another class. This is what another class we are using, and that class name is, let's say, class dog extends animal, and here I am writing, let's say, void bark
and this is what? This is okay. So the dog is another class. This is the another class. This class is what? This is the our child class. This dog is our child class, and this is what? This is extending. That means inheritance is occurring, and what it is inheriting? The animal class. So that means the method that is present inside the animal class will also be included in this class also, because it is extending. If inheritance concept is what? That if it is inheriting that parent class, then the parent class properties and behavior will be inherited to the child class. That means this method will also be present. If we didn't write it, then also this method will be inherited to the child class, because we are extending the parent class. So that's why here this method will be inherited inside this dog class. Okay, so that means this method, this void it method is also present here, because it is extending the animal class. So now we are doing what? Let's say we are naming a class, another class. That name is what? We are saying that, let's say class name is single inheritance. That class name is single inheritance. We are naming that single inheritance. And inside of this class, what will be there? Inside of this class, we are using public static void main. Okay, so string args, and now inside of it, what we will do? Inside of it, we will create the object. So which object we will create? Can you tell me which Animal object class. we will create? Animal Hmm? class. Animal Dog class. class. No. Yes, because animal class, if we want to access animal class, you can also create. That is animal class we can create, but in the animal class, we will not able to see this void bark. This method, if we want to access this method, we cannot do that, because animal class is not extending the dog class. Dog class is extending the animal class. That means that in the animal class, the method is present. It will also be present in the dog class also. But here, if we create the animal class, then we can only able to access this method. We cannot access this method because the animal class is not extending the dog class. So that's why if we want to access both method using same object, using the same object, then we have to we have to create the dog class. Through the dog class object, we will able to access that same object. We will able to access eat and bark. Both method we can able to access. So that's why dog, let's say I am naming that object as dog D equal to new dog. And with this object, we are this method we are calling, and through this object we can also access this method also. So that means through the dog class object we are also able to access the eat method, because when it will extend means the method or the variable that is present in the parent class, it is extending in the child class. So this eat method will be present inside this class also. So that's why with the dog class object, we are able to access eat method. But I will show you that if
let's say in this case, you see, in this case, let's say we first save it. Let's say we are giving the name of it as our single inheritance. The single inheritance. Now we will open the command prompt and go to the particular location. So I have used this in the documents, so inside of it, and then okay, 1 minute. One. Okay. Oh, sorry. You see, both are here. Use both the output we are able to see here. That means barking and eating, because we are using this. Now, if let's say here we create the animal class object. Animal, let's say same object name I am giving, let's say, then animal. Then you will see what it will show.
here the error is showing because bark is what? Bark is present inside the our dog class, but using the same object we want to access the bark method, but here we didn't perform that animal, then we have to do what? Animal extends dog. In that case we will able to see that. In that case we will able to see that. That means if say here I change it, then the position will also be replaced. So that means for this it will not show. That's why this is what extend means. That means one method, if we want to show it, then we have to use what? We have to extend that. So that's why the error is shown, because the bark method is what? Method bark, and it is variable d of type animal, and this animal class is not extending anything. So that's why there is the error is shown. Okay, समझ में आया? It is clear to everyone? Sir, It is can you clear? repeat that part again? Okay. देखो इसमें क्या है कि हम फर्स्ट क्या किए, ये जो फर्स्ट हम कर रहे हैं, तो इसमें अगर नॉर्मल हम रखते हैं कि डॉग डॉग टी इक्वल टू, हाँ अगर हम लोग क्लास एनिमल एक्सटेंड्स डॉग कर दें और यहाँ पर जो क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल को हटा दें तो हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है। अब मानो कि हम एनिमल और इसका हम एनिमल क्रिएट किए, फिर एक्सटेंड्स डॉग, ठीक है। यही क्योंकि हम क्या है एनिमल जो है उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए, तो इसका मतलब क्या है कि डॉग के अंदर जो मेथड है वो मेथड इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि डॉग जो है क्लास डॉग को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसलिए क्या है वॉइड बार्क जो है वो मेथड एनिमल में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि एनिमल क्लास अब क्या है डॉग क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, वही हुआ। क्योंकि अभी क्या है कि एक्सटेंड जब होगा जिसके वही होगा क्या, वही चाइल्ड क्लास है, वही चाइल्ड क्लास है। तो अभी क्या है कि एनिमल जो है, एनिमल मेरा चाइल्ड क्लास है और डॉग मेरा पेरेंट क्लास है, तो इसलिए क्या है कि डॉग के अंदर जो मेथड है वो मेथड एनिमल क्लास के अंदर भी प्रेजेंट है, क्योंकि डॉग क्लास को क्या है एनिमल क्लास एक्सटेंड कर रहा है। तो डॉग क्लास के अंदर क्या मेथड है, वॉइड बार्क, ये मेथड है। तो अब क्या है ये वॉइड बार्क मेथड अभी एनिमल क्लास के अंदर चले आएगा। तो एनिमल क्लास के अंदर जाने का मतलब ही क्या है कि हम अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है हम दोनों मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या है दोनों मेथड को हम कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? Sir, in simple that dog class cannot access animal. डॉग क्लास एक्सेस समवन नहीं, सर मतलब जो मेरा डॉग को ऑब्जेक्ट से हम लोग ईट को कॉल नहीं कर सकते ना। डॉग का तुम क्रिएट कर सकते हो, मगर डॉग का क्रिएट करने से क्या है कि हम बोल रहे हैं जो चाइल्ड क्लास है जो क्लास को एक्सटेंड करेगा, तो मतलब क्या है कि तुम पूरा को एक्सेस कर सकते हो। इसमें क्या है कि डॉग क्लास के अंदर जो मेथड है, हम डॉग क्लास का अभी क्या है कि हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किए तो इसके अंदर जो मेथड है सिर्फ उसको ही हम एक्सेस कर सकते हैं। बट Yes, sir, अगर समझ हम गए सर। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जाए, ठीक है,
समझ में आया? तो यस सर। वही है कि यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस हम बोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गया हम लोगों का सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या है कि सिर्फ एक क्लास को एक क्लास एक्सटेंड करे बस। अभी मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, तो मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस में क्या है, सिंपल इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते रहा है, तभी क्या है देखोगे, तभी ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जा सकते हैं। कि मानो हम क्या किए कि ये इसमें जगह में लिख दिए एक्सटेंड्स, जो मेरा पहले था एक्सटेंड्स एनिमल, और अभी ये क्या है मेरा मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल मतलब क्या है कि देयर शुड बी अ लेवल, मतलब क्या है कि मेरा एक लेवल टाइप का बनेगा, ऐसे कि एक बेस क्लास है, उसको क्या है दूसरा कोई क्लास इनहेरिट कर रहा है, सेकंड क्लास, उसके बाद क्या है कि और एक क्लास है जो ये सेकंड क्लास को एक्सेस कर रहा है। तो मानो मतलब इसके अंदर जो मेथड है, लेट्स से इसके अंदर ए मेथड है, अब ये ए मेथड को क्या है, ये जो दूसरा क्लास सेकंड क्लास है ये एक्सटेंड कर रहा है, तो मतलब क्या है ये ए मेथड इस सेकंड क्लास के अंदर तो प्रेजेंट होगा ही, उसके साथ उसका जो ओन मेथड, मानो कि कोई और मेथड है वो भी प्रेजेंट होगा। तो मानो और जो एक मेथड है वो है बी, तो ये बी क्या है, ये बी सेकंड क्लास के अंदर भी जो है सेकंड क्लास का ओन मेथड है, तो ये बी तो रहेगा ही, साथ साथ ये ए भी रहेगा, क्योंकि ये जो है ये सेकंड क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो मतलब फर्स्ट क्लास का जो मेथड है वो मेथड तो उसके अंदर एक्सटेंड हुआ ही, उसके साथ उसका अपना जो मेथड है वो भी है। और जो मेरा थर्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास क्या कर रहा है, सेकंड क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो मतलब सेकंड क्लास को इनहेरिट करने से क्या होगा, ए प्लस बी, ये दोनों मेथड तो उसके अंदर थर्ड क्लास के अंदर प्रेजेंट है, और मानो थर्ड क्लास के अंदर और एक मेथड है सी बोल के, तो ये सी क्या है, ये सी मेथड भी इधर रहेगा। तो मतलब मुझे तीनों मेथड को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करेंगे तो सिर्फ ये दो मेथड को हमको मिलेगा। अब इसका क्या है, अगर फर्स्ट जो है फर्स्ट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए तो मुझे तो सिर्फ एक ही मेथड मिलेगा और तो कुछ नहीं। तो मतलब हमको सारा मेथड अगर एक्सेस करना है तो चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर क्या होगा, ये टोटल तीनों मेथड ही प्रेजेंट होगा। तो अब अगर मुझे ये तीनों मेथड ही एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तब क्या है, थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से मेरा हम ये तीनों मेथड को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो वही है हम लोगों का मल्टी लेवल में। तो मल्टी लेवल में क्या है, देखो फर्स्ट जो क्लास लिया हम एनिमल क्लास वो सेम ही रखे हैं, जो दूसरा क्लास था वो क्लास डॉग जो क्लास है वो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब वॉइड ईच मेथड अभी डॉग क्लास के अंदर प्रेजेंट होगा। और एक है मानो मेरा थर्ड, और एक थर्ड टाइप क्लास है, मानो और एक थर्ड टाइप क्लास है, वो क्लास है उसका नाम हम रख रहे हैं बेबी डॉग बोल के। बेबी डॉग एक्सटेंड्स क्या है, जो सेकंड मेरा क्लास था उसको एक्सटेंड कर रहा, और इसके अंदर क्या है, हम मानो कि एक मेथड नाम दे रहे हैं व्हिप। अब मानो कि मुझे एक्सेस करना है, मुझे तीनों मेथड को एक्सेस करना है, तो तीनों मेथड को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तीनों मेथड ही मुझे एक्सेस करना है, तब हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बोल सकते हो कि किसका ऑब्जेक्ट हम तब क्रिएट करेंगे, तीनों मेथड को मुझे एक्सेस करना है, तब मेरा ये तीनों मेथड ही एक्सेस करना है, तो हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे। सर वीप का। हाँ
ये क्लास का, बेबी डॉग का, ये क्लास, बेबी डॉग, हाँ बेबी डॉग क्लास का, क्योंकि बेबी डॉग क्लास जो है उसके अंदर क्या है, ये सारा मेथड मेरा इनहेरिट हुआ, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें अंदर void it और void bark ये दोनों मेथड है। अब इसको ही क्या है, एक्सटेंड करें बेबी डॉग क्लास, तो मतलब void it void bark दोनों ही अब बेबी डॉग के अंदर एक्सटेंड हो जाएगा, और उसका तो खुद एक अपना मेथड है जो void weak बोल के। तो अगर मुझे तीनों क्लास, सॉरी नॉट तीनों क्लास, तीनों मेथड को ही मुझे एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम हम जो चेंज करके, लेट्स से और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, मानो मल्टी लेवल। तो देखो तीनों मेथड ही मेरा आ गया इधर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? इट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। और थर्ड जो इनहेरिटेंस मेरा होता है, थर्ड टाइप इनहेरिटेंस मेरा क्या है, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मेरा ऐसे एक सिंगल पेरेंट क्लास है, और ये जो सिंगल पेरेंट क्लास है उसका क्या है, उसका मल्टीपल चाइल्ड है, और ये जो मल्टीपल चाइल्ड है, ये मल्टीपल चाइल्ड क्या कर रहा है, ये मल्टीपल चाइल्ड उस सेम क्लास को एक्सटेंड करेगा। ये जो मल्टीपल चाइल्ड है ये सेम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा। तो मतलब मेरा चाइल्ड क्लास बहुत सारा हो सकते हैं, मगर ये जितना मेरा चाइल्ड क्लास है सभी चाइल्ड क्लास क्या करेगा, सेम पेरेंट क्लास को ही एक्सटेंड करेगा। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, मानो
इधर एक सिंपल चेंज हम कर देते हैं। सिंपल चेंज में ये जैसे हम रखे हैं वैसे ही रखने दो। सिंपल और एक ये जो है इसमें हम कर रहा है एनिमल। तो मतलब क्या है, एनिमल मेरा पेरेंट क्लास है और ये दोनों ही क्या कर रहा है, ये दोनों ही, ये जो डॉग क्लास है और बेबी डॉग, ये दोनों पेरेंट चाइल्ड क्लास है, मेरा मल्टीपल चाइल्ड क्लास है। बट ये दोनों ही देखो सेम पेरेंट क्लास जो है, सेम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो इसका अगर ये अगर हम बनाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो एनिमल है, तो बेबी डॉग जो है, बेबी डॉग के अंदर कौन सा मेथड प्रेजेंट होगा, कौन सा मेथड प्रेजेंट होगा बेबी डॉग के अंदर, अगर देखो तुम, ये सिर्फ वॉइड ईट मेथड प्रेजेंट होगा और वॉइड वीप, ये मेथड तो बेबी डॉग के अंदर नहीं आएगा, ये मेथड मेरा नहीं आएगा। तो मतलब ये इसको हमको एरर शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। ठीक है, तो अगर हम करते हैं, देखो इसको अगर रन करेंगे, इस जगह में हम हायरार्कियल कर देते हैं। सर हायरार्कियल लेवल लिखा हुआ है। हम्म हम्म यहाँ पर आप हायरार्कियल लेवल हायरार्कियल लेवल लेवल लिखो, ठीक ठीक ठीक। सेव भी हुआ मल्टी लेवल में होता है। क्या ई आ रहे हो? वो ठीक है। सर आप जो क्लास का नाम लिखे हैं वो सेव करें तो मैच नहीं है। 嗯嗯嗯。 हम्म हम्म हम्म। 嗯 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 हम्म हम्
सर वही नोटपैड से ही कॉपी कर लीजिए। अरे यार यार वो बोल तो रहे, देखो ना गलती से पेन सर ये कॉपी कर लीजिए, हायरार्किकल लेवल इनहेरिटेंस। सर सेव तो पहले करिए।